So we are discussing on the technical process of bondage of karma. Last time Pandit Todomalji told us that what is the process to have or the bondage of karma. There was a one sentence at the starting of this topic was that further it should be known that owing to the rise of nam karma, body, organ and speech mind are created due to nimitta of their movement. The space point of the soul vibrate by the virtue of the soul attain the power of getting it into bondage from the spices of karmic matter. So here Panditji discussed about the mithyatva. He told us that what is the name of kashaya. So mithyatva, due to mithyatva, all are or kashaya what we are having. So that is due to mithya bhav, mithyatva. And what the bondage of karma we are having, the prakriti of karma, what we are having is only due to that mithyatva bhav. So here Pandit is just trying to explain us what is the process of bondage of karma. He has also given a very wonderful example of a wine, though he's not motivating anyone by taking the example of wine, but he's just giving an example which is very popular for common man, so it is easy to understand. So here he's telling us that Manush, Tryanch, Dev, Narki, etc. are having kashai, and due to that kashai, they are having bondage of karma. If you are having a high volume or high level or high intensity of kashai, it means the bondage of karma will be like that. And if you are having low intensity of kashai, so bondage of karma will be low fruitful in nature. So it's a very clear that what is happening in our life is the result only what karmas which we just had by the bhav, by the kasai bhav in our previous life. So here Pandit is saying that if you are having alp kashai, it means low bondage of karma will be there. And if you are having tivra kashai, it means you will have bondage of karma for long time. Last time we discussed in the paragraph 1. Second paragraph, further yoga is two types: auspicious activity and inauspicious activity. Okay, Saurabh, पढ़िए आप इसको. Further yoga is two types. जी सौरभ जी. Further, yoga is of two types: auspicious activity, Shubh Yoga, and inauspicious activity, Ashubh Yoga. Inclination through mind, speech, and body in pious acts is called Shubh Yoga, and inclination in impious acts is called Ashubh Yoga. Whether there be Shubh Yoga or Ashubh Yoga, without attaining right belief, Samyat, bondage of all sorts of species of Ghati karma continues incessantly. Even for a single moment, bondage of any species of karma does not stop. However, the specific point is that in the pair of has shok, laughter and lamentation, rati arati, liking and disliking, and three types of Vedas, sex, passions, of Mohaniya deluding karma is one time on in one time only one in each group get gets bonded. Okay, so it is Further, just okay, simple term what Pandit is saying that there are two pairs, Shubh, Ashubh, uh, Rati, Arati, Has, Shok. So he's telling that the yoga, there is a two types of yoga. Shubh yoga, it means auspicious. Ashubh yoga, it means inauspicious. So when you are indulging auspicious yoga,
by using man, vachan, kaya. So you will have the bondage of good karma, auspicious karma, shubh karma, and opposite of that, it means when you indulge yourself, your bhav, in bad activities by using man, vachan, kaya, so you will have inauspicious bondage. But the rule is that there is no time, there is a no moment when there will be no bondage of karma. It means continuously, in continuous way, continuous manner, we are having karma, inflow of karma inside our soul on continuous basis. There's not a single moment when the inflow of karma and outflow of karma can be stopped. Even this process cannot be stopped by Indra or Jinendra, because since time immortal, we are having this inflow and outflow of karma on regular basis. So we must remember that inflow of karma cannot be stopped, except that at the time of realization of soul, it means atmanubhuti. But in general, we can say that there was no time, there is no time, there will not be no time when the bondage of karma or inflow of karma can be stopped anyhow by anyone. Okay. Saurabh, So further in I the have a spices question. of Bhagati Karma. So we have a Mm-hmm. question here. Mm-hmm. Yeah, so I think last time I remember we had discussed about like there was a question that I had about how we characterize or define Shubh and Ashubh Yog. What is like pious versus not non-pious activity, right? And I think you mentioned about intentions, right? Like what is the intention behind the act that kind of determines, and like we can take example of doctor putting a cut versus a hunter trying to feed the birds, where they are actually seeming to do like contradictory activities, but intention is different. So one is violence and one is not. Like hunter is causing a violence even though he's not trying, like even though he's feeding, and doctor is actually, even though he's cutting, he's not actually doing a violence because he is actually trying to save the patient. So now, in this example, we understood about the importance of intention, but then there were a couple of more points came into my class, in my Pachala class here where I take. So wanted to ask, like, so if someone is doing activity without intention, like say they don't want to harm anyone, but they're negligent. Like for example, someone is driving and they are texting while driving, and they hit someone and they hurt someone. So they can say that, oh, I didn't have any bad intentions. I didn't want to harm that person. But they were negligent, right? They were doing things that they weren't supposed to do. They didn't take care. They didn't do due diligence. They weren't careful. So would that be considered ashubh yog? The activity which is devoid of Dev Shastra Guru, Swadhyaya, etc., all those activity are called Ashubh. So if you say that the someone is driving car and he's not having any kind of bad intention to hit anyone. So if we talk about as per government rule, government says that you can think anything, but the action will be taken by us only when we can see in action. Like you have just hit anyone, we will just punish you. Second thing, you are free to think anything. We cannot measure your intention. And if you are saying that my intention was not bad, you will have to prove. So that is different procedure of government, or we can see in outer world. But we are talking about bhav pradhan. Bhav pradhan, it means abhipray, bhav, vichar, etc. So there are two types of bhav, shubh and ashubh. Having auspicious intention, bhav is called shubh bhav. Having inauspicious intention, bhav, it is called ashubh bhav. It's a simple thing, I think.
So I want to take another example to clarify this. Like say for example, when a doctor is trying to perform a surgery, like so he's trying to save someone, right, by giving it that person a treatment. So normally we would say that that doctor is in शुभ भाव because he's trying to save someone, like किसी को help कर रहा है वो time पे. पैसे के लिए नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि चलो चैरिटी के लिए ही कर रहा है कि उसको हेल्प करनी है by for free and he wants to save the patient. So he has no monetary intention and he wants to simply save the patient. So in that situation, but if while performing that act, if doctor is negligent, is not following the due diligence, तो और वो केयरलेस है, उसकी वजह से वो पेशेंट को कोई नुकसान होता है, तो वो डॉक्टर को का हम अशुभ भाव बोलेंगे या शुभ भाव बोलेंगे वो टाइम पे, अगर वो नेग्लिजेंट है. जैसे कभी कभी कोई डॉक्टर भूल जाते, राइट, सर्जरी का इंस्ट्रूमेंट दे फॉरगेट इन पेशेंट्स बॉडी. First of all, he's not fully aware to his profession what he's doing. Second thing, if we see that he's having intention to serve society without intention of having any kind of money or any malicious purpose, but he's not well trained. So, he knows that he's not well trained in that thing. In spite of knowing this, that I am not well trained, I cannot operate properly, he's just, he's considering himself to serve in this manner. It is a Ashubhav. It means there is a Kashai ki tivrata. You know that I am not perfect in that profession. It means to for a specific operation, and you are doing that, saying that I have a good intention, and it may be that I can just save the life of that patient. It may be that can be died. So it is in the category of Ashubhav. And if you say that no, there is a one doctor who is really trained and he's good in profession, he's good, he's having good intentions. Of course, he will take money because he has just to support his family by that money. What we will say that doctor is having Ashubhav or Shubhav. So that is called that will be called Udyogi Hinsa. Okay, Arambi Hinsa and Udyogi Hinsa. These are the inseparable part of any grahast. So it will be called Udyogi Hinsa. And as per the intensity, as per the level of that bhav, he may have Purna bhav, Shubha or Ashubha. So this clarifies, I think, very important topic. I think so. To define something as a shubh or a shubh, apart from intention, the other factors such as the knowledge or ignorance, and whether he's like they are careful or not careful while performing act, they matter as well, right? To define whether the activity is shubh or a shubh, like you just explained. I'm not getting what you told. मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे शुभ और अशुभ भाव को हम वो क्लासिफाई करने के लिए इंटेंशन के अलावा ज्ञान है या अज्ञान है या फिर प्रमाद है या प्रमाद नहीं है, वो भी मैटर करता है वो डिफाइन करने में कि ये शुभ है या अशुभ भाव है. Of course, it means you basically it is your personal thing. If we have planned to recognize the Shubh and Ashubh bhav of others, so it is the subject matter of Sarvagyadev. We can only just responsible for my intentions, my Shubh and Ashubh bhav, my abhipray, my vichar. So we can know our kasha, the level of kashaya and the Shubh and Ashubh bhav. If we talk about that, how can we recognize the Shubh and Ashubh bhav of others? Um, in general term, you can just measure Shubh and Ashubh bhav, but in deeper term, we cannot measure Shubh and Ashubh bhav because we cannot read his man. We cannot just measure his the intensity of his kashaya, whether Shubh or Ashubh. So it is for personal use, whether my kashaya is Shubh or Ashubh. Correct, sir. Yeah. So basically, while performing an act, we need to think. So we need to keep in mind that we have pure intentions. Second, we need to keep in mind that are we being careful enough
taking all the due diligence and precautions in performing that. And then the third thing is, are we sufficiently well trained into and we have proper knowledge of for performing the act? Right? So those are the things that we need to keep in mind to ensure that our bow remains good. ऑफ कोर्स। देखिए इसमें ना एक अभी आने वाला हमारा जो इसके बाद 2 पैराग्राफ बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो उसमें एक बढ़िया सेंटेंस आएगा, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑलवेज आई लाइक दैट एंड ऑलवेज आई मेंशन इन माय पर्सनल लाइफ इन थॉट्स एंड ऑलवेज आई एडवाइज दैट सेंटेंस टू अदर्स। पंडित जी ने एक सेंटेंस कहा है, आई कैन से दैट इन हिंदी, हिंदी में उसका भाव समझ में आएगा। उन्होंने ऐसा कहा है, जिन्हें बंध ना करना हो वे कषाय ना करें, है ना? तो जिन्हें बंध ना करना हो वे कषाय ना करें का मतलब क्या होता है कि यहाँ शुभ अशुभ में कोई फाइट नहीं चल रही है। वो तो ये बोल रहे हैं कि अगर आपको अशुभ का बंध ना करना हो आपको, तो आप कषाय मत करो व्यर्थ में। तो उनने हमें एक एडवाइस दी है कि जिन्हें बंध ना करना हो वे कषाय ना करें, या यूं समझिए जिनको बंध नहीं होता है उनको कषाय नहीं होती है। हमारे सिद्ध भगवान, उनको कषाय नहीं होती है, इसलिए उनको बंध भी नहीं होता है। So of course it is very important matter that Ji is describing here the process of Prakriti Pradesh Sthiti and Anubhavan. So he has not written here more detail about Prakriti Pradesh Sthiti and Anubhav. He has just summarized the subject and matter of this. We can just study in detail from Government Sar Karm Kand. But here he is only just having a one thought to tell about this, that there is no jeev, there is no gati which can be called as without bandh. If you are in sansar, if you are having any worldly life, you cannot stop the inflow and outflow of karma even for a moment. So he is just telling about Shubh and Ashubh. He is telling about Anubhag Bandh, Pradesh Bandh, Sthiti Bandh. Okay. Next spices of Agati Karma. नेक्स्ट पेज पे होगा राइट? Got it? Further in the Yeah. Further, in the species of Aghati karma, during Shubh Yog, Sata Vedniye, pleasure producing karma, etc., auspicious species of karmas get bonded, and during Ashubh Yog, Kunjan ji. सौरभ जी कुछ कह रहे हैं? हाँ हाँ, मैं क्या आवाज नहीं आ रही थी मुझे। अभी फिर से पढ़ूं इस पैराग्राफ को? Further in the spices of Agati Karma. पढ़ता हूँ सौरभ जी यहाँ पर वापस से। Further, in the species of Aghati karma, during Shubh Yog, Sata Vedniye, pleasure in producing karma, etc., auspicious species of karmas get bonded, and during Ashubh Yog, Asata Vedniye, pain producing karmas, etc., inauspicious species of karmas get bonded, and during Mishra Yog, mixed auspicious inauspicious activity, some auspicious and some inauspicious species of Aghati karmas get bonded. Okay. So it is a very simple thing. What we know that Sata Vedni, Asata Vedni. Sata Vedni is a Punya Prakriti and Asata Vedni is a Pap Prakriti. So when you are having inauspicious thoughts, in inauspicious vichar bhav, so that is the call. That will be in cause of Pap Prakriti Bandh, Sata Vedni. And if you are having auspicious karma, that is called Shubh Yog, and so there will be Sata Vedni.
It means Pun Prakriti. So here, mixed inauspicious and auspicious and inauspicious activities. Some auspicious and some inauspicious of Aghati Karm get bonded. So there are some mixed kind of Prakriti. Sometime Pun Prakriti, sometime Pap Prakriti. Thus, the inflow of the karma take place due to the instrumentality of yoga. Hence, yoga is a ashram, influx, and the quantity of atoms of karmic matter so attracted through that yoga is called pradesh. Thus, the atoms of the bonded get divided into main types of subtypes of karma. Therefore, it should be known that space bondage and type bondage are caused by yoga. So here is the conclusion of this topic. What Panditji has presented over here. That there are two types Pradesh Bandh and Prakriti Bandh. So प्रदेश बंध जो है वो आत्मा के प्रदेश से बनता है. प्रकृति बंध अर्थात कि उसका नेचर कैसा है. It's a simple thing what Pandit ji has described here. So now next topic is duration of the fruition of the bondage caused by the passions. कषाय से स्थिति और अनुभाग. पहले लिया था योग से प्रकृति और प्रदेश बंध. अभी ले रहे हैं कषाय से स्थिति, पैसेंस मतलब कषाय ले रहे हैं, कषाय से स्थिति और बंध. पढ़िए आदर्श जी, आप पढ़िए. Does the inflow of karmas take place due to No, instrumental? I have this I have completed. Next paragraph. Duration and fruition bondage caused by passions. Further, wrong belief, mithyatva, and anger dispositions are evolved due to the rise of moha, deluding karma. All these dispositions are collectively termed as kashai, passions. Due to that passion, the duration bondage, kshiti bandha, of those karmic species takes place. Out of the total duration so bonded, leaving aside the abadhakal, the period of karmas lying bonded in inoperative state. Afterwards, till the bonded duration ends, every moment the rise, uday, of that prakriti, particular species of karma continues. Excepting the ayu karma of celestial beings, human beings and subhuman beings, animals, all the other species of ghatiya and aghatiya karmas get bonded with less duration in the state of feeble passion and with more duration in the state of intense passion. And these three types of ayu karmas get bonded with more duration in the state of feeble passion and with less duration in the state of intense passion. Okay. So Pandit ji is now discussing about the wrong belief, mithyat, anger, etc. disposition are evolved due to rise of the moha. All these disposition are collectively termed as a kashay. कषाय किसका नाम है? तो बोला कि ये जो मिथ्यात्व से क्रोधाधिक भाव होते हैं ना, वो सारे के सारे कषाय कहलाएंगे और उनसे ही कर्मों की स्थिति बनती है. You know, there is a simple question which can be arise in our mind. That what is the rule or mechanism of the bondage of karma? That in from where these karmas get power, when they will just be in my uday, what the fruit will give. So there are many questions. So here there are four words: prakriti, pradesh, sthiti, and anubhag. तो वो कह रहे हैं ये सब सामान्यतः कषाय हैं. मिथ्यात्व क्रोधाधिक जो भाव होते हैं उनको कषाय बोलते हैं और कषायों से ही कर्म प्रकृतियों की स्थिति बनती है. So you must note it because कषायों से कर्म की स्थिति बंधती है. पंडित जी आगे
के 2-3-4 पैराग्राफ हैं, उसमें यही वाली बात बताने वाले हैं. He's going to tell about this and he will just clarify कि कषाय से जो है स्थिति बनती है या कर्म बनते हैं. By some example. अब यहाँ आबाद काल, there is a word आबाद काल. I think it cannot be translated properly, or it is not possible to translate आबाद काल, though translator has tried to write the translation of the period of the karma lying bondage in the inappropriate state. It is called आबाद काल. तो वहां जितनी स्थिति बंधे उसमें से आबाद काल को छोड़कर पश्चात जो बंधी हुई स्थिति पूर्ण हो उसके तब तक प्रति समय उस प्रकृति के कर्म का उदय आता रहता है. उन्होंने कहा है कि जब तक जितनी स्थिति बंधी है उस आबाद काल को छोड़कर, मतलब आबाद काल को इन्होंने यहाँ क्लैरिफाई किया है कि जो कर्म का पीरियड है जब वो बंधा है, वो इनएक्टिव स्टेट में है, वो उसको छोड़कर जब तक वो कर्म की प्रकृति पूरी खत्म ना हो जाए तब तक उसका उदय आता रहता है. देव मनुष्य त्रियंश जो हैं वे सारे उनके घाती अघाती कर्म की प्रकृतियां जो होती हैं उसमें कषाय थोड़ी होने पर थोड़ा स्थिति बंद होता है और कषाय बहुत हो तो बहुत स्थिति बंद होता है. इतना जान लेना कि जो आयु है, आयु का अल्प कषाय से बहुत और बहुत कषाय से अल्प स्थिति बंद होता है. तो आयु कर्म का बता दिया उनने कि अगर कषाय आपकी मंद है तो उससे बहुत आयु का बंध होगा, लंबी आयु बंधेगी, और अगर आपको कषाय ज्यादा है तो आपको अल्प आयु का बंधन होगा. मैंने बोला ना डिटेल में जस्ट वी कैन नो फ्रॉम कॉमर्सार कर्म कांड, लेकिन पंडित जी तो यहाँ एक सामान्य सी प्रक्रिया बता रहे हैं कि एक तो जो कर्मों का बंधन होता है वो किससे होता है. तो उन्होंने बताया कि कर्मों का बंधन जो है वो मिथ्यात्व से होता है, कषाय से होता है. फिर आप जितनी कषाय करेंगे उतना बंधन होगा, जितनी उसमें इंटेंसिटी रहेगी उतना बंधन होगा. कषाय करने से रिमेम्बर वन थिंग, कषाय डजंट मीन दैट यू आर एक्सप्रेसिंग दैट. कषाय डजंट मीन दैट आई कैन सी योर कषाय, यू कैन सी माय कषाय. कषाय कैन बी सीन और नॉट. It may be that the kashaya can be seen, but bondage of karma will not be like that. The bondage of karma will be opposite. But in general, we can talk that we cannot see the whole kashaya which is evolving in my man or outside my just man. हम किसी के बाहर के चेहरे के एक्सप्रेशन या एक्टिविटी देख के पहचान सकते हैं कि ये कषाय कर रहा है, परंतु हमारे मन में जो निरंतर कषायें चलती रहती हैं, who will be responsible for that? And those activity what we are thinking, or that halal chalan, that chanchalta, what Pandit ji just used this word, chanchalta, योग चंचलता. तो हम अगर सोते सोते में कुछ सोच रहे हैं, कषाय तीव्र होगी हमारी, तो यहाँ करें पंडित जी तीव्र बंद होगा आपको. लोगों को लग सकता है, कोई अगर आपको देख रहा है सपोज दैट, तो वो ऐसा देखेगा अरे बड़ी मंद कषाय है इनकी, तो एकदम चुपचाप है, कुछ नहीं कह रहे हैं. बाकी यहाँ पंडित जी ने कहा कि आपको अगर अंतरंग में कषाय की तीव्रता है तो बंधन होगा आपको, और अगर ज्यादा तीव्र कषाय है आपकी तो आपको अल्प आयु का बंधन होगा, और मंद कषाय है तो आपको ज्यादा आयु का बंधन आपको होने वाला है. तो ये एक नॉर्मल सा उन्होंने रूल बताया है. आयु कम ज्यादा कैसे मिलती है, कम कषाय से मतलब मंद कषाय से ज्यादा आयु और तीव्र कषाय से कम आयु का बंधन होता है, ऐसा इन्होंने कहा. तो इसमें पूरा ये टेक्निकली बता रहे हैं, ये आगे भी अभी कर्मों की उदय अवस्था जो चलेगी, द्रव्य कर्म भाव कर्म का स्वरूप भी आएगा, नित्य निगोध इतर निगोध का भी आएगा. तो यू मे फील सम काइंड ऑफ बोरिंग बिकॉज it is just technical process of bondage of karma, but Sorry, very but there is important. a very important takeaway here, and that if we want to live longer, I mean, this life, whatever we have acquired, Ayu from previous life, we will continue with that. I mean, we will just get that much. But in future, if we want to live longer in next lives, we need to keep our kashayas low. Then
and then we get longer आयु as per the principle. Also, it also matters, right? That जब आपने बताया तीव्र कषाय और मंद कषाय आयु पर डिपेंड करती है, तो वैसे ही हमें पता है तो ज्यादा स्ट्रेस करता है वो जल्दी उसको हेल्थ प्रॉब्लम होकर उसकी लाइफ पूरी खत्म हो जाती है हाँ, जल्दी, और जो कम अकाल मृत्यु भी हो सकती है. हाँ, अकाल मृत्यु भी हाँ? हो सकती है. अकाल मृत्यु भी हो सकती है कि जितनी आयु लेके आए वो भी नहीं दोगे. Exactly. So it's not just for future. वो करंट में भी अप्लाई हो रहा है कि whoever is stressing out more, हमें पता है स्ट्रेस से जान जाती है, और जो रिलैक्स्ड है वो आनंद में रहता है, they live longer. yeah, yesterday एक मेरी स्टूडेंट थी, मैंने उसे 5-6 साल पहले पढ़ाया होगा. अब मैं तो कई लोगों को पढ़ा के भूल जाता हूँ. आप लोगों को इसलिए नहीं भूल पाता हूँ कि आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैं. तो टुडे आई जस्ट सॉ हर फोटो इन फ्रंट पेज ऑफ न्यूज़पेपर. आई वाज शॉक्ड कि इसकी फोटो क्यों आई है. तो पहले तो मैंने देखा तो मैंने कहा अरे कोई पहचानी लग रही. तो फिर मैंने कहा अरे ये तो ये है, मैंने इसे पढ़ाया है पहले, 2-3 साल क्लास में आई होगी. तो उसमें लिखा था कि दिस जैन गर्ल हैज कमिटेड सुसाइड. अभी 2 महीने उसकी शादी को हुए. रीजन कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि अ, लोग, मतलब हम अपनी जैन कम्युनिटी की बात करते हैं, दूसरों की तो ठीक है, पर जैन कम्युनिटी में भी अपने यंगस्टर कितने कितने स्ट्रेस में है. आईटी में थी वो कितने स्ट्रेस में है. मतलब व्हाई शी हैज डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड. We उसके have मम्मी had पापा similar events as well in Houston into last few years. Some young Jain people, they committed suicide. So that was very sad to hear. तो ये जो प्रीतेश जी बोले ना, स्ट्रेस बराबर है. मतलब ये भाव भी हमारा कम हो जाता है ऐसे देखें तो. अकाल मृत्यु हो सकती है उससे, तो कषाय अपनी मंद रखें. और मैं तो सबको एक बात बोलता हूँ, हमारे जीवन में टेंशन लेने जैसी तो कोई चीज है ही नहीं. मतलब हमारे पूरे जीवन काल में ऐसा कुछ नहीं हो सकता जिसकी हम टेंशन लें. क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं. हम कुछ बदल नहीं सकते, पता है. हम कुछ नहीं बदल सकते. अपना रूप, रंग, अपनी परिस्थितियां. Sometimes it seems to us that we can change. I can change anything because I am intelligent, I have power, I have money, I have connections. मैंने यहाँ कई लोगों को देखा है कि जिनके पास सब कुछ होने के बाद भी कुछ ही नहीं कर पाते वो. तो अल्टीमेटली पता है बात आती कर्मों पर आती है. जब बात कर्मों पर आती है तो मैं बोलता हूँ आखिरी में आप कर्मों का सोचेंगे तो आप पहले ही सोच लीजिए ना. Ultimately you are having a bad kashaya, तीव्र kashaya in your life, and at last you will think okay it is वस्तु व्यवस्था. भाई तो स्टार्टिंग में सोच लो ना. तो इसलिए कहा है कि तीव्र कषाय से है अल्प आयु बंद और मंद कषाय से ज्यादा आयु का बंध होता है. तो हम लोग अपना ऐसा मान लें कि भाई हम लोग यहाँ तक तो पहुंच गए, 38-40 तक तो पहुंच गए, तो लंबी आयु है हमारी. मतलब अभी तक यहाँ तक पहुंच गए तो मान लें कि भाई हम लंबी आयु हैं, तो हमारी कषाय मंद रही होगी पुराने भवों में. तो मैं तो खैर ऐसा मानता हूँ कि कषाय तीव्र करने जैसा कोई मैटर होता ही नहीं है. सौरभ जी, जैसे एक क्वेश्चन था. मुझे वो पूछना था, आप अभी बता रहे थे कि कर्मा के साथ मतलब एवरीथिंग इज डिसाइडेड. आप जैसे बोल रहे थे ना, वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग. तो कर्मा और फ्री विल का इंटरेक्शन क्या होता है, लाइक जैनिज्म के हिसाब से? नहीं देखिए, कर्मा karma is like your fixed deposit. So you have already deposited the amount in your bank and you will get that amount. Okay. There are some exceptional, for example, sankraman of the karma. Some shubh karma can be converted into ashubh and ashubh can be converted into shubh. But what you have deposited in your bank, you will definitely after maturity, you will get that only. And now for your future life. So what you are collecting, what you're depositing in your karma bank, so that will be the result of your present bondage of karma in future. तो ये बहुत सिंपल है. आप जो कर्म अभी बांधेंगे उनका फ्यूचर में मिलेगा. आपने जो बांधे थे वो अभी मिल रहे हैं. तो हम नहीं बदल सकते हैं. हमें ऐसा लगता है कि हम बदल रहे हैं, बदल सकते हैं, बदल रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है. इवन आई हैव जस्ट मेट many intelligent person, many big businessmen, और
जो उनके डिसीजन सही होते थे वो ही उनके गलत होने लगे। सेम पैटर्न पे सब कुछ सेम रहा। तो फिर आखिर बात यही आती ना, अल्टीमेटली हम यही कह सकते हैं कि भाई इनने जो बांधा था वही तो उदय में आएगा ना, उसको ही कैन नॉट चेंज एनीथिंग। तो ये हमें ऐसा लगता है कि वी कैन चेंज एनीथिंग, और कभी कभी हम कर भी देते हैं तो फिर हमें और ये पक्का हो जाता है, हमारा बिलीफ जो है ना फर्म हो जाता है कि हाँ हाँ देखा चेंज किया ना मैंने, आई हैव चेंज दैट। लेकिन अगर हम डीपर सेंस में जाके देखें तो हम कभी कोई चीज चेंज कर ही नहीं पाए। So, Mishi, to add to your point, so normally what happens is whenever we do our worldly activities, so there is a instrumental factor connection, right? Like, so for any factor work to happen, there is a internal factor and there is a external factor. So normally when we do activity, like we may be an instrumental factor in performing that activity, and when that thing is supposed to happen, so it happens with we being an external factor in it. And so what happens is in this process, if it things go right, it subconsciously reinforces our ego that it happened because of me. While so for example, teacher and a student, if teacher teaches the student learns because of his inherent capacity, and teacher's work is to teach. Now if teacher believes that okay, student learned just because of me, then it reinforces that subconsciously that karta bhav, which is what Jainism is trying to tell us, that yes, you were an external factor, you did your part, but the process of learning happened in his own thing. Like now going back to your interaction, right, कि कर्म जो हुआ है तो अब हो गया है, वो तो हमारा उसको फल मिल रहा है, बट नाउ व्हाट इज आवर फ्री विल? अगर सब कुछ ऐसे ही होना है, कर्म से होना है, तो हमारी फ्री विल कहाँ रही? तो फ्री विल ऐसे आती है, despite however much difficult situation we may be in, doesn't mean we have to be unhappy about it. We still have a free will to perceive that situation with the right belief and right understanding, and do or not do kashaya. And if we don't do kashayas, we remain calm and equanimous, then we have an ability to not get unhappy about it. We still have a free will. So how we perceive it, how we feel, and what type of kashayas we do, that's totally our free will, even at this moment, regardless of type of circumstances we are in. Okay, got it. Yeah, that's very helpful. Thank you. There is one more thing to add here is free will. We think of it as I want to do everything, but you don't know what the future is. So the karmas will decide that everything is gonna get done and this is how it's gonna done. But who knows what is gonna happen? So again, that's the way I look at it. Like nobody has seen it and we don't know it. You just continue on the path to religion, and then you should be on right track. Otherwise, you will still attract bad karma. And normally what Okay, so happens, you know this religion is a religion of relaxation. What principles, what we are reading, or what are mentioned in Janagam, Janvani. So all principles are really relaxing principles. मतलब ये मेरा मानना है, ऐसा नहीं है कि मेरा मानना है, ये जिनवाणी को पढ़ के मेरा एक एक्सपीरियंस है, जो मैं ये बोलता हूँ कि संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान जिनागम में ना हो। ठीक है, अभी जैसे हम लोग ये पढ़ रहे हैं, कर्म की व्यवस्था पढ़ रहे हैं हम लोग, तो कर्म की व्यवस्था हमें कितना रिलैक्स कर दिया हमें। अब हमें अपने हमें जब आईने के सामने खड़े होंगे ना, तो हमें अपने शरीर से कोई शिकायत नहीं रहेगी कि यार आई एम नॉट लुकिंग गुड, मेरी इतनी लंबाई होना चाहिए, मुझे इतना होना चाहिए था, ऐसा दिखना चाहिए था। हमें सिंपल क्लियर है, हमारे नाम कर्म का उदय जैसा है मैं वैसा हूँ, मैं अच्छा हूँ कि बुरा हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। Someone may consider me as just bad looking. Someone may consider me that I am good looking, but मैं जैसा हूँ वैसा हूँ. So these principles from Jinagam are really relaxing kind of thing, और ये हमारा मन एकदम क्लियर बना देते हैं। तो जो और एक बात इसमें जो मिशी ने कहा उसमें कि जैसे आपने हमें हमेशा से समझा है, राइट, कि we have निश्चय and व्यवहार है, right? So normally when we are doing our activity, worldly activities, we, yes, even though we won't believe कि ये हमारी वजह से हुआ है,
we will continue to do activities as per our worldly conducts and worldly defined procedures and processes. And while doing that, we will say कि हाँ ये मैंने किया है, ये मैं कर रहा हूँ, बोलेंगे तो सही, पर ये मेरी वजह से हुआ है या फिर मैं ही इसका करता रहता हूँ, मेरे बिना ये नहीं होता, ऐसा ऐसा भाव नहीं रखेंगे अंदर से। तो इस तरीके से हम एक्टिविटीज भी कर पा रहे हैं, हम करतापना से भी छुटकारा पा रहे हैं। सो वी आर रिमेनिंग हाँ। फ्री फ्रॉम आवर बॉन्डेजेस। बढ़िया है। ये तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि ये एकदम रिलैक्स करने वाला रिलीजन है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पहले कि जैसे कई लोग पूछते हैं, जैसे बातचीत चलती है, वो थोड़ा सा ह्यूमरस वे में पूछते हैं, ऐसे पंडित जी आपको कभी क्रोध नहीं आता? तो मैं बोलता हूँ आप क्रोध के अवसर बनाओ, मैं क्रोध बताऊंगा। नहीं, मैं इसलिए पूछा था आपको कभी क्रोध में नहीं देखा। तो मैंने कहा क्रोध के कोई अवसर ही नहीं बनते, और बनते भी हैं तो मैं उनको बनाता ही नहीं। मैंने कहा आता है मुझे, लेकिन कब आना चाहिए वो डिपेंड करता है। तो मैंने उस ह्यूमरस वे में अंदाज किया। और ये मैं जब जॉब करता था, मेरे कलीग भी पूछते थे और दूसरे भी पूछते हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई, आप ये कंफ्यूजन में मत रहना, मुझे नहीं आता है। आता है लेकिन कॉज तो बनाओ आप। तो सपोज दैट वो लोग सोचते हैं कम आता है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि भाई जिनवाणी पढ़ते रहने से ऑटोमेटिक कषाय की मंदता रहती है। और वो मेरी रहे, आपकी रहे, किसी और की रहे, वो हमारे दिमाग में मैटर बड़ा क्लैरिफाई हो जाता है। मैं तो सबको क्या बोलता हूँ, मैं ही जीव हूँ बस केवल, इसके अलावा मैं किसी को जीव नहीं मानता। ये मैंने नहीं कहा, ग्रंथ में लिखा है, शास्त्र में। मैं ही जीव हूँ और इसके अलावा मैं किसी को जीव मानता ही नहीं। क्यों? उनका जीवत्व मेरे कोई काम में आने वाला नहीं, और मेरा जीवत्व उनके काम में आने वाला नहीं। इसलिए मैं तो मानता हूँ कि मैं ही जीव हूँ बस, और मेरे लिए सब अजीब हैं। सब अजीब नहीं हो गए, मेरे लिए सब अजीब है का मतलब है कि देयर इज अ पर्सन हु इज अ बिलियनियर, ही इज हैविंग बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड डॉलर्स। तो मैं क्या करूं भाई, उसका पैसा उसके काम में आएगा, मुझे उसकी महिमा क्यों आनी चाहिए भाई? उसका पैसा उसके काम में, मेरे लिए तो जड़ है वो पैसा, मेरे लिए तो समझ लो कागज है मेरे लिए। तो ऐसे ही हमारे लिए क्या है, हम कर्मों का जब पढ़ते हैं, तो हमें अपने कर्मों के बंधन पर ध्यान देना है, हमें अपने विचारों को देखना है, अपने अध्ययन को देखना है, दूसरों को देखने की जगह। तो एक रिलैक्सिंग होने का ये भी है हमारा तरीका है इसमें। तो इस क्लास में हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट की तो काफी चर्चा करते रहते हैं स्टार्टिंग से। प्रेरित जी ने ये विषय काफी अच्छे से उठाया था स्टार्टिंग में। तो वो अब वर्ल्ड वाइड सबको दिख रहा है कि भाई स्ट्रेस मैनेजमेंट हो रहा है। और प्रेरित जी पता है, मैं अभी जो थीसिस लिख रहा हूँ अपनी पीएचडी की, तो उसमें मैंने ये टॉपिक लिया है, मतलब एक थोड़ा सा चैप्टर मैंने लिया है उसमें, हाउ यू कैन मैनेज योर स्ट्रेस बाय जैन प्रिंसिपल्स। तो वो मैं अभी लिख रहा हूँ वो उसमें, तो उसमें भी आएगा। तो ऐसे करके हम कर्मों की व्यवस्था समझ रहे हैं हम अपनी। और ये कर्मों की व्यवस्था समझने से फायदा हमें ये होने वाला है कि हमें कभी कोई विचार नहीं आएंगे इस प्रकार के कि मैं ऐसा काम कर लूं तो ऐसा हो जाता, ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। सिंपल सी बात है, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। पूर्व में जो कर्म बांधे थे अभी उदय में आएंगे, अभी जो बांधूंगा वो अगले भाव में उदय में आएंगे। तो इस तरह से हमारी आज की क्लास भी बढ़िया। आज बहुत टाइम बाद अच्छी उपस्थिति है, मतलब सबकी उपस्थिति है, एक दो लोगों को छोड़कर। ऐसे आप लोग आइए, और मैं भी यहाँ से मेरे जितने मिलने वाले हैं मैं उन सबको यहाँ से अभी एक मैसेज बना के डालता हूँ मैं क्लास में आने के लिए, क्योंकि टॉपिक तुम्हारा इंटरेस्टिंग चल ही रहा है। और अभी क्लास हम खत्म करते हैं। एक प्रे जी, एक अभी मतलब शूटिंग चल रही है, मैं शूटिंग छोड़ के आया क्लास लेने के लिए। तो शूटिंग चल रही है अभी, एक मूवी बन रही है, शॉर्ट मूवी, आखिर मैं ही क्यों, अ मूवी ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट। अभी आएगी 10-20 दिन बाद, तो आप लोगों को पता चलेगी। सिंपल सी मूवी है, कोई ऐसी बहुत हाई फाई नहीं है, वो एक मैसेज के लिए बना रहे हैं हम लोग। बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। उसमें अपन यही बताएंगे कि भाई किसको किस चीज पे स्ट्रेस होता है और वो जैनागम से कैसे उसको कंट्रोल कर सकता है। बहुत बढ़िया सर जी, वेरी नाइस। हाँ, तो चलिए आज की हमारी क्लास पूरी हुई। और निशी आप पहली क्लास में आई, सो बढ़िया। प्रेरित जी ने मेरा परिचय आपको दे दिया है, और आई होप एंड वी होप that you will continue to come or to attend this class, because we just discuss lots about lots of things. हम आर्गुमेंट रखते हैं यहाँ, डिस्कस करते हैं, सारी चीजों को एनालाइज करते हैं,
conclusion निकालते हैं. So I think if you just continue this class, you will feel better for Mishi, life and for your thoughts. Saurabh ji and everyone has contributed to having a very open environment. So never hesitate to express your questions, doubts, concerns, or anything like that. At times you will find that we even disagree in class, and then we have different opinions. But that's okay. It's all part of learning. So yeah, feel free to express your doubts, opinions, questions anytime, either in the group WhatsApp or in the class as well. Definitely. Thank you so much, Farid Bhai and Saurabh ji, for having me today. I really enjoyed the class. Okay. जिनवाणी स्तुति लेते हैं हम लोग. निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना सत बार है, वंदना सत बार. जय जिनेंद्र सभी को. Jinendra. Jai Jinendra. Yeah, thank you. Thank you, sir. जी.